अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum dear students. Mathematics Grade 3 Punjab Curriculum and Textbook Board Lahore. Dear students, as you know, we have started Unit 2 Number Operations, and in Unit Number Operations we have completed add numbers up to 4 digits with and without carrying. Add numbers up to 100 using mental strategies. Solve real-life number stories up to 4 digits with and without carrying involving addition. Subtract numbers up to 4 digits with and without borrowing. Subtract numbers up to 100 using mental strategies. Solve real-life number stories up to 4 digits with and without borrowing involving subtraction. Develop multiplication tables for 6, 7, 8 and 9. Multiply 2-digit number by 1-digit number. Multiply a number by 0 and 1. Apply mental strategies to multiply 1-digit number to 1-digit number. We have completed 1 to 3 main topics: addition, subtraction and multiplication. We learned how to add numbers up to 4 digits with and without carrying. यानी हमने इनसे प्रीवियस वीडियोस में सीखा कि नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे अप टू 4 डिजिट तक विद और विदाउट कैरिंग के साथ। विदाउट कैरिंग तो बहुत सिंपल है। विद कैरिंग में आपने जो आपके पास डबल डिजिट आते हैं, आपने जो वंस प्लेस में होता है उसको कॉलम्स में जो भी गिवन है उसमें मेंशन करते हैं और जो राइट साइड पे होता है उसको आप कैरी दे देते हैं। इसी तरह हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व की विद एंड विदाउट कैरिंग इन्वॉल्विंग एडिशन। हमने सीखा कि नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं विद और विदाउट बोरोइंग के साथ। अगर छोटा नंबर हो तो हम कैरी लेते हैं, जो उसके लेफ़्ट साइड पे नंबर होता है उससे, देन हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व की। इसके अलावा हमारी जो लास्ट वीडियो थी, लास्ट लेसन था, उसमें हमने सीखा कि टेबल्स को कैसे डेवलप करते हैं 6, 7, 8 और 9 के। देन वी डिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2-digit नंबर बाय 1-digit नंबर, multiply a number by 0 and 1. Then we did mental strategies to multiply 1 digit to 1-digit number. यानी हमने उसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल सीखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट्स नंबर सीखी, यानी 2 डिजिट नंबर हों तो उसमें हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके बाद हमने देखा कि एक नंबर जब वो मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ और 1 के साथ तो क्या रिज़ल्ट आता है। और मेंटल स्ट्रेटजीज यानी मेंटल मैथ्स को यूज़ करते हुए हमने 1 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर के साथ क्विकली मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम ये टेबल डेवलप करना सीख चुके थे, इसलिए हम अप्लाई मेंटल स्ट्रेटजीज इजीली कर सकते हैं। आज के लेसन में हम रियल लाइफ मल्टीप्लिकेशन की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में एक्सरसाइज 4 में वो सॉल्व करेंगे। वो सॉल्व करने से पहले आई एम गोइंग टू रीकैप व्हाट वी लर्नड इन आवर प्रीवियस लेसन। ओके, इन आवर प्रीवियस लेसन वी लर्न how to develop table of 6, 7, 8 and 9. I am going to revise these tables for your convenience. Okay, table of 6. Table of 6, let's repeat with after me. 1 times 6 is 6. 2 times 6 is 12.
3 times 6 is 18. 4 times 6 is 24. 5 times 6 is 30. 6 times 6 is 36. 7 times 6 is 42. 8 times 6 is 48. 9 times 6 is 54. And 10 times 6 is 60. Yes. Now you can also revise like this. 6, 12, 18, 24, 36, 42, 48, 54 and then 60. Also memorize this. When any number is multiplied by 6 then we get the same even number at ones place. यानी जिस भी नंबर से आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इवन नंबर को, तो जो आपके पास वंस प्लेस पे होगा वो वही नंबर होगा जिससे आपने उसको मल्टीप्लाई किया था. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू टेबल ऑफ 7. अब टेबल ऑफ 7 को रिवाइज कर लेते हैं. टेबल ऑफ 7. 1 times 7 is 7. ये जो है ना मल्टीप्लाई, इसको टाइम्स बोलना है. और 1 7 r is equal to 7. 2 7s r is equal to 14. 3 7s r is equal to 21. 4 7s r is equal to 28. 5 7s r is equal to 35. 6 7s r is equal to 42. 7 7s r is equal to 49. 8 7s r is equal to 56. 9 7s r is equal to 63. 10 7s are 70. Okay, now let's move to table of 8. Must remember the key fact that when any number is going to multiply like this or you are going to change its sequence, the answer will be same. And you know very well what is multiplication. Multiplication होता क्या है, यानी same number को repeatedly add करने से जो हमारे पास result आता है, that is our multiplication. Now table of 8. Now let's read after me. 1 8s are 8. 2 8 are 16. 3 8s are 24. 4 8s are 32. 5 8s are 40. 6 8s are 48. 7 8s are 56. 8 8s are 64. 9 8s are 72. 10 8s are 80. Well done. Now table of 9. 1 9's time is 9. 2 9's time is 18. 3 9's time is 27. 4 9's are 36. 5 9's are 45. 6 9's are 54. 7 9's are 63. 8 9's are 72. 9 9's are 81. And 10 9's are is 90. Well done. In this way, we have developed the table of 6, 7, 8 and 9. We have completed the exercise 3. And after developing the table, we did the multiplication of 2-digit number by 1-digit number. There are few steps you have to follow while multiplying the 2-digit number. Step 1, you have to write the question in vertical form. यानी आपने इसको vertical form में लिखना है. ये आपके पास जो है ना like this, ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये आपके पास वर्टिकल होता है. यानी आपके पास जो आपके रूम का जो फ्लोर है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल है और जो इसकी वॉल्स हैं वो क्या है, वर्टिकल. तो आपने इसको वर्टिकली लिखना है. देन स्टेप 2, मल्टीप्लाई द डिजिट्स एट वंस. यानी जो वंस पे है आपने उसको उससे मल्टीप्लाई कर लेना है. फिर स्टेप 3 में आपने वंस को 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है. ठीक है, ये इसके मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स हैं. इसमें हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी जो एग्जांपल्स गिवन है. नाउ लेट्स कम टू आवर टुडेज लेसन. बिफोर कमिंग टू टुडेज लेसन, ऑल्सो रीकैप दिस. मल्टीप्लाई नंबर बाय 0 and 1. यानी कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर 0 ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल 7 मल्टीप्लाई 0, तो आंसर क्या आएगा, 0. गुड. 9 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर इज 0. 0 multiply 1 is 0. Okay. Any number is going to multiply with 1. यानी कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर वो सेम नंबर आता है जो कि यहाँ पे गिवन होता है, that is 7. Like 2 multiply 1 is equal to 2. 7 multiply 1 is equal to 7. Okay. Now let's come to our today's lesson.
In our previous lesson, we did exercise 4, question 1, multiplication, and there is two parts of question 1 and 2. Then we solved the following by using tables. Then we did we have completed question 3 and question 4. Now let's come to question 5. Today we will complete this exercise, question 5, 6, 7 and 8. These are the real life problems of multiplication. So before starting, we have to read this statement at least 3 times to understand what the question is asking from us. Okay, now let's start. That is question 5, that is on page 68. If Habib spends rupees 24 in one day, if Habib spends rupees 24 in one day, then how many rupees will he spend in 4 days? If Habib spends rupees 24 in one day, then how many rupees will he spend in 4 days? The question is asking, अगर हबीब के पास, जो हबीब है उसके पास 24 रुपीज़ हैं और वो एक दिन में, ये हबीब है, एक दिन में 24 रुपीज़ स्पेंड करता है. ठीक है, अब आपने बताना है कि एक दिन में 24 करता है तो 4 दिन में वो कितने करेगा. यानी आपको पता है कि एक दिन में वो कितने रुपीज़ स्पेंड कर रहा है, 24, तो 4 डेज में कितने करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट. हबीब spends in one day में कितने स्पेंड करता है हबीब, ₹24. Okay, now the question is asking how many rupees will he spend in 4 days, यानी वो 4 दिनों में कितने पैसे स्पेंड करेगा. तो इसका मतलब है कि एक हमारे पास है एक दिन के, यानी 24 को आप 4 के साथ क्या करेंगे, multiply. Well done. So we get our answer. He spent in 4 days. तो 4 days में कितने स्पेंड करेगा, यानी 4 दिनों में वो कितने रुपीस स्पेंड करेगा, आपने ये फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 24 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. यस, हम 4 मल्टीप्लाई 24. ओके, नाउ you have to follow the steps. Step 1, write it in vertical form like this. यानी 24 को ऊपर लिखा, जो 2 डिजिट नंबर है, जो सिंगल डिजिट नंबर है उसको नीचे लिखा. ऊपर आपने लिखा ones and tens. now multiply them. 4 times 4, 4 4s are क्या होता है, 4 का टेबल पढ़ें 4 तक. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16. okay, 16. so we will write 6 here. 6 को यहाँ पे लिखेंगे जो 1s प्लेस पे, और 1 को कैरी दे देंगे ऊपर 10s प्लेस पे. अब मल्टीप्लाई दिस विद दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इस 4 को इस 2 से किया, क्योंकि ये 4 ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना. पहले 1s प्लेस पे जो डिजिट गिवन है, देन जो 10s प्लेस पे गिवन है. ओके, नाउ मल्टीप्लाई देम. 4 times 2, 4 का टेबल 2 तक पढ़ें. 4 1s are 4, 4 2s are 8. ओके, 8 plus 1, 8 में 1 ऐड करें, 9. well done. okay, the answer is ₹96. Habib spends ₹96 in 4 days. ठीक है, यानी हबीब 4 दिनों में कितने रुपीस स्पेंड करेगा, 96 रुपीज स्पेंड करेगा 4 दिनों में. यानी आपके पास एक दिन में गिवन थे कि वो 24 रुपीज स्पेंड करता है, तो आपने फाइंड करना है कि वो 4 दिनों में कितने पैसे खर्च करेगा. तो वो आते हैं 96. ओके, आई एम गोइंग टू रीकैप अगेन. हबीब के पास कितने पैसे, 24. वो एक दिन में 24 रुपीज स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है. ठीक है, अब आपने बताना है कि हाउ मैनी रुपीज़ विल ही स्पेंड इन 4 days. वो 4 दिनों में कितने पैसे खर्च करेगा. एक दिन के तो आपको पता है, तो 4 दिन के कैसे फाइंड करेंगे. ही स्पेंड इन 4 days इज इक्वल टू 4 × 24, यानी एक दिन को आपने
मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ, 4 दिनों के साथ। तो फर्स्ट स्टेप फॉलो किया, वर्टिकल फॉर्म में आपने इसको लिखा, देन जो आपके पास सिंगल डिजिट नंबर था उसको आपने नीचे लिखा, देन मल्टीप्लाई किया 4 को 4 से 16, 6 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी, 4 times 2 8, 8 plus 1 9। Thus हबीब spends ₹96 in 4 days, यानी हबीब ₹96 स्पेंड करता है 4 दिनों में। ओके 6, question 6। Now let's read the statement. There are 7 days in a week. There are 7 days in a week. How many days are there in 52 weeks? There are 7 days in a week. यानी there are 7 days in a week, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। How many days are there in 52 weeks? तो आपने बताना है कि अगर 52 वीक्स हों तो उसमें कितने दिन होंगे। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आपको पता है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 7 डेज। तो आपने फाइंड करना है हाउ मेनी डेज आर देयर इन 52 वीक्स में कितने डेज होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। डेज इन अ वीक, how many days in a week? 7. Okay, how many days are there in 52 weeks? Days in 52 weeks, ये हमने फाइंड आउट करना है कि 52 वीक्स में कितने डेज हैं, कितने दिन हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 with 52, 7 with 52। फर्स्ट स्टेप, देयर आर 3 steps। फर्स्ट स्टेप, you have to write it in vertical form, ठीक है। 2 डिजिट नंबर को आपने टॉप पे लिखा और 1 डिजिट नंबर को आपने नीचे बॉटम पे लिखा। देन वी विल पुट द मल्टीप्लिकेशन साइन, वी विल राइट हियर वंस एंड टेंस। 7 टाइम्स वंस को 1 से मल्टीप्लाई किया आपने और जो वंस है उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया। 7 times 2, now read the table of 7 till 2, 7 ones are 7, 7 twos are 14, 14। What we have to do, we are going to write this 4 in ones place and we will carry this 1 that is on the left side, the top of the tens place. Now we have to add this 1 in this, multiply this 7 with this 5, 7 times 5। Now read the table of 7 till 5, 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28, 7 fives are 35। Now add 35 plus 1, yes, 36। So there are 364 days in 52 weeks, यानी आपके पास 52 वीक्स में कितने डेज हैं? 364। So I'm going to write there are 364 days in a week, in 52 weeks, not a week, there are 52 weeks. There are 364 days in 52 weeks. I'm going to repeat this question. The question is asking you have to calculate how many days are there in 52 weeks, यानी 52 weeks में कितने दिन हैं। आपको पता है एक हफ्ते में 7 दिन हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट। डेज इन अ वीक, कितने दिन हैं एक वीक में? 7। डेज इन 52 वीक्स, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 7 with this 52। Step 1, there are 3 steps. Step 1, write in vertical form. Step 2, multiply ones with ones. Step 3, multiply ones with tens. Then we have our answer, that is 364 days in 52 weeks. Okay, now next, question number 7. Question number 7, before starting we have to read the statement and we have to understand what is asking in the question, what is required in the question. Question 7, as you can see there are trees. If there are 28 trees in one row, if there are 28 trees in one row, then how many trees are there in 5 such rows? If there are 28 trees,
How many trees? 28 trees in one row, यानी एक row में आपके पास, as you can see, this is one row, this is another row. Then how many trees are there in 5 such rows? अगर इसी तरह की 5 rows हों तो उसमें कितने trees होंगे? ठीक है. If there are 28 trees in one row, so I am going to write there are trees in one row. एक row में कितने trees हैं? 28. Then how many trees are there in 5 such rows? Then how many trees are there in 5 such rows? आपने find out करना है कि ऐसी 5 rows में कितने trees हैं. So we have to write trees in 5 such rows. What we have to do, यानी एक रो में आपके पास 28 हैं तो 5 में कितने होंगे? Yes, multiply this 5 with this 28. Now follow 3 steps. Step 1, write ones and tens, then write it in vertical form. 28 multiply 5. Now multiply them, ones with ones and ones with tens, like this. 5 को 8 से और 5 को 2 से multiply. 5 times 8. Now read the table of 5 till 8. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, and 5 8s are 40. Yes, 40. We will write 0 in ones place and we will carry this 4 upon tens. Now multiply this 5 with this 2. Whatever the answer is, we have to add this 4 in our answer. 5 times 2. 5 1s are 5, 5 2s are 10. 10 plus 4, 14. Yes, 10 plus 4, 14. So we have 140 trees in 5 such rows. So I'm going to write there are 140 trees in 5 such rows. यानी ऐसी 5 अगर rows हों तो उसमें कितने trees होंगे? 140. How many trees? 140. If there are 28 trees in one row, एक row में 28 trees थे तो आपने 5 rows में find out करना था कि कितने trees होंगे. एक row में आपको पता है 28 trees हैं तो 5 में आप multiply करेंगे 28 को 5 से. 3 steps को आपने फॉलो करना है. स्टेप 1 वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, देन वंस को 1 से, देन स्टेप 3 वंस को 10 से. तो हमारे पास कितने ट्रीज आ गए? 140 ट्रीज इन सच 5 सच रोज. ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4. Question 8. Question 8, as you can see, there is a motorcycle. Okay, let's read. A motorcycle can cover a distance of 62 kilometers in 1 liter of petrol. A motorcycle can cover a distance of 62 kilometers in 1 liter of petrol. 62 kilometers in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 4 liters? How much distance will it cover in 4 liters? Question is, मोटरसाइकिल है जो डिस्टेंस कवर करती है 62 किलोमीटर्स 1 लीटर पेट्रोल में. कितना? 1 लीटर पेट्रोल में वो 62 किलोमीटर्स कवर कर सकती है. हाउ मच डिस्टेंस आपने फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 4 लीटर ऑफ पेट्रोल में. अगर वो 4 लीटर ऑफ पेट्रोल यूज़ करे तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी. सो वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन. सो आई एम गोइंग टू राइट motorcycle can cover in one distance. Motorcycle covers distance in 1 liter of petrol is equal to 62 kilometers. I'm going to write the short form of kilometers, that is km.
km. This is the abbreviation of kilometer km. Now we have to find how much distance will it cover in 4 liters. तो 4 लीटर में कितना कवर करेगी डिस्टेंस? Covers distance in 4 liter of petrol. 4 लीटर यूज करे पेट्रोल का तो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है ये मोटरसाइकिल. सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 4 विद दिस 62. ठीक है, 62 2 डिजिट नंबर को आपने 1 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, देन आपने इसमें 1s और 10s प्लेस मेंशन किया, देन राइट इट इन वर्टिकल फॉर्म 62 and 4. Now multiply 1s with 1 and 1s with 10s. 4 times 2. 4 का टेबल 2 तक रीड करें. 4 1s are 4, 4 2s are 8, and 4 multiply 6. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6 are 24. 4 6 are 24. Again see, 4 times 2, 4 1s are 4, 4 2s are 8, and 4 times 6 are 24. 248. Distance covered. How much distance will it cover in 4 liters of petrol? So we will write distance cover a motorcycle can cover 248 kilometer in 4 liters of पेट्रोल. यानी मोटरसाइकिल 4 लीटर पेट्रोल यूज़ करते हुए कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है? 248 किलोमीटर. अगेन सी दिस क्वेश्चन इज मोटरसाइकिल कैन कवर डिस्टेंस ऑफ 62 किलोमीटर्स इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. यानी 1 लीटर में वो 62 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करती है, रास्ता तय करती है. आपने बताना है कि वो 4 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी. आपने 4 को 62 से मल्टीप्लाई किया, देन फॉलो द 3 स्टेप्स, देन वी हैव आवर आंसर, दैट इज अ मोटरसाइकिल कैन कवर 248 किलोमीटर इन 4 लीटर ऑफ पेट्रोल. Okay, we have completed this exercise 4. Hope so you have understood today's lesson. Let's recap what we have done today. We did exercise 4, question 5, 6, 7 and 8. These are the real life problems of multiplication, and we solved 4 questions. While solving these 4 questions, we have to read the statement at least 3 times, and after understanding and marking the key concept, highlighting the key concept, key statement, we have to write the statement from the question. Then we have to solve by following all the 3 steps. What are the steps? Step 1, write in vertical form. Step 2, multiply 1s with 1. Step 3, multiply 1s with 10s, and then you have your answer. Okay dear students, now it's time to do the practice of these questions. Do the practice of these questions and practice of this multiplication of 2-digit number with 1-digit number. In next lesson we will start division of 2-digit number by 1-digit number. Till then you have to do the practice of these questions. Question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Till then take care and Allah Hafiz.